children, welcome back to your English class. Today, in this video, we are going to start a new chapter from our own grammar book, and the name of the chapter is Conjunctions. Conjunctions? Ma'am, what are conjunctions? कहीं आप उस जंक्शन की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, जो हम ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम डिफरेंट स्टॉपेज पे देखते हैं? ओह माय गॉड, मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस से डाइवर्ट होके रेलवे स्टेशन चले गए। No, my kids, let's understand what are conjunctions. Conjunctions are joining words. They are also known as connecting words. They join words, group of words or sentences. So students, conjunctions को joining words कहा जाता है and इन्हें connecting words के नेम से भी जाना जाता है. And do you know इनका काम क्या होता है? ये वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. The two conjunctions that we will read in this chapter are and but. Let's understand about these conjunctions with the help of some examples. The first conjunction that we will know in this video is and. We use and when we talk about similar ideas or add information. That means हम and का यूज तब करते हैं जब हम two similar ideas को join करते हैं या फिर information add करते हैं. Let's see some examples of and. Tom loves to play cricket. Tom loves to play football. Students, यहाँ Tom के choices की बात कर रहे हैं. That means Tom को क्रिकेट भी खेलना पसंद है as well as football भी. तो यहाँ पर two similar ideas match हो रहे हैं. इसलिए जब हम इन sentences को join करेंगे तो वो कुछ ऐसे ready होंगे. Tom loves to play cricket and football. Let's see some more examples. Dog is a faithful animal. Dog is a clever animal. अब यहाँ दोनों sentences में dog की ही बात हो रही है, as well as dog कैसा है उसकी बात हो रही है. तो जब हम इन sentences को join करेंगे तो ये कुछ ऐसे ready होंगे. Dog is a faithful and clever animal. तो आपने देखा, हमने इन sentences को join करने के लिए and का यूज किया है. Let's see one more example. Friday is a holiday. I will go for shopping. Now students, यहाँ पर second sentences में information add हो रही है, इसलिए हम इन्हें join करने के लिए and का यूज करेंगे. तो जब हम इन sentences को join करेंगे तो ये sentences कुछ ऐसे ready होंगे. Friday is a holiday and I will go for shopping. So students, यहाँ हमने जितने भी sentences को join किया है वो सारे and से join हुए हैं. स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी भी सेंटेंसेस को एंड से ज्वाइन करेंगे तो हमें एक बात का ध्यान देना होगा. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल दीज थिंग्स थ्रू द एग्जांपल्स दैट वी हैव अटेम्प्टेड. दैट मींस हमने जो एग्जांपल अटेम्प्ट किए हैं मैं उसके जरिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी.
अब हम वो एग्जाम्पल लेंगे जो हमने अभी अभी अटेम्प्ट किए हैं। जैसे टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट, टॉम लव्स टू प्ले फुटबॉल। अगर आप इन टू सेंटेंसेस को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि टॉम लव्स टू प्ले 2 टाइम्स रिपीटेड है। तो जब हम इन 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करके 1 सेंटेंस बनाएंगे तो हम रिपीटेड पार्ट को कट करके वहां एंड यूज करेंगे एंड देन हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे रेडी हो जाएगा। टॉम लव्स टू प्ले क्रिकेट and football. Now students, after the explanation, I hope you have understood all the things regarding conjunction and. So, let's move to practice time given from the content. Let's see and try to understand. Join these sentences using and. अब आपको क्या करना है, नीचे जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको उसे and की हेल्प से ज्वाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस है हरी हैज अ व्हाइट शर्ट, हरी हैज अ येलो कैप। नाउ स्टूडेंट्स, आपको जो भी रिपीटेड पार्ट दिखाई दे रहा है उसे रिमूव करके एंड का यूज करके सेंटेंसेस को ज्वाइन करके 1 सेंटेंस रेडी करना है। The second sentence is this biscuit is sweet, this biscuit is salty. Remember, you have to cut the repeated part as well as उसमें and add कर देना है। Next is my uncle is tall, my uncle is smart. Fourth is I have a chocolate, I am going to eat it. Now students, आपको एक बात का ध्यान देना है कि यहाँ पर सिर्फ आपको and use करके इन sentences को join करना है। That's it for today kids. I hope you have understood all the things regarding conjunction and. So, we will meet again in the next video with conjunction but. So till then, take care, wear mask, follow hygiene, maintain social distancing. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye.